In many cultures, the customary answer is that a god or gods created the universe out of nothing. But if we wish to pursue this question courageously, we must, of course, ask the next question. Where did God come from? If we decide that this is an unanswerable question, why not save a step and conclude that the origin of the universe is an unanswerable question? Or, if we say that God always existed, why not save a step and conclude that the universe always existed, that there's no need for a creation, it was always here? These are not easy questions. Cosmology brings us face to face with the deepest mysteries, with questions that were once treated only in religion and myth. Who knows for certain? Who shall here declare it? Whence was it born? Whence came creation? The gods are later than this world's formation. Who then can know the origins of the world? None knows whence creation arose, or whether he has or has not made it, he who surveys it from the lofty skies. Only he knows, or perhaps he knows not. These words are 3,500 years old. They're taken from the Rigveda, a collection of early Sanskrit hymns. The most sophisticated ancient cosmological ideas came from Asia, and particularly from India. Here, there's a tradition of skeptical questioning and unself-conscious humility before the great cosmic mysteries. Amidst the routine of daily life, in, say, the harvesting and winnowing of grain, people all over the world have wondered, where did the universe come from? Asking this question is a hallmark of our species. Understand the origin of the cosmos in familiar biological terms, the mating of cosmic deities, or the hatching of a cosmic egg, or maybe the intonation of some magic phrase. The Big Bang is our modern scientific creation myth. It comes from the same human need to solve the cosmological riddle. Most cultures imagined the world to be only a few hundred human generations old. Hardly anyone guessed that the cosmos might be far older, but the ancient Hindus did. They, like every other society, noted and calibrated the cycles in nature. The rising and setting of the sun and stars, the phases of the moon, the passing of the seasons. Pongal Festival is the rejoicing in the fact that there are cycles in nature. But how could such cycles come about unless the gods will them? And if there are cycles in the years of humans, might there not be cycles in the eons of the gods? The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths, correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still. The deep and appealing notion that the universe is but the dream of the god, who, after 100 Brahma years, dissolves himself into a dreamless sleep, and the universe dissolves with him. Until, after another Brahma century, he stirs, recomposes himself, and begins again to dream the great cosmic lotus dream. Meanwhile, elsewhere, there are an infinite number of other universes.
each with its own god, dreaming the cosmic dream. These great ideas are tempered by another, perhaps still greater. It is said that men may not be the dreams of the gods, but rather that the gods are the dreams of men. In India, there are many gods, and each god has many manifestations. These Chola bronzes cast in the 11th century include several different incarnations of the god Shiva, seen here at his wedding. The most elegant and sublime of these bronzes is a representation of the creation of the universe at the beginning of each cosmic cycle, a motif known as the cosmic dance of Shiva. The god has 4 hands. In the upper right hand is a drum whose sound is the sound of creation. In the upper left hand is a tongue of flame, a reminder that the universe, now newly created, will, billions of years from now, be utterly destroyed. Creation, destruction. Profound and lovely ideas are central to ancient Hindu beliefs, as exemplified in this Chola temple at Dharasuram. They are a kind of premonition of modern astronomical ideas. Without doubt, the universe has been expanding since the Big Bang, but it is by no means clear that it will continue to expand forever. If there is less than a certain amount of matter in the universe, then the mutual gravitation of the receding galaxies will be insufficient to stop the expansion, and the universe will run away forever. But if there is more matter than we can see, hidden away in black holes, say, or in hot but invisible gas between the galaxies, then the universe holds together and partakes of a very Indian succession of cycles, expansion followed by contraction, cosmos upon cosmos, universes without end. If we live in such an oscillating universe, then the Big Bang is not the creation of the cosmos, but merely the end of the previous cycle, the destruction of the last incarnation of the cosmos. Neither of these modern cosmologies may be altogether to our liking. In one cosmology, the universe is created somehow from nothing 15 to 20 billion years ago and expands forever, the galaxies mutually receding until the last one disappears over our cosmic horizon. Then the galactic astronomers are out of business. The stars cool and die, matter itself decays, and the universe becomes a thin, cold haze of elementary particles. In the other, the oscillating universe, the cosmos has no beginning and no end, and we are in the midst of an infinite cycle of cosmic deaths and rebirths, with no information trickling through the cusps of the oscillation. Nothing of the galaxies, stars, planets, life forms, civilizations evolved in the previous incarnation of the universe trickles through the cusp, flitters past the Big Bang to be known in our universe. The death of the universe in either cosmology may seem a little depressing, but we may take some solace in the timescales involved. These events will take tens of billions of years or more. Human beings, or our descendants, whoever they might be, can do a great deal of good in tens of billions of years before the cosmos dies. The universe truly oscillates. If the modern scientific version of the old Hindu cosmology is valid, then still stranger questions arise. Some scientists think that when redshift is followed by blue shift, causality will be inverted and effects will precede causes.
First, the ripples spread out from a point on the water's surface. Then, I throw the stone into the pond. Some scientists wonder, in an oscillating universe, about what happens at the cusps, at the transition from contraction to expansion. Some think that the laws of nature are then randomly reshuffled, that the kinds of physics and chemistry we have in this universe represent only one of an infinite range of possible natural laws. It is easy to see that only a very restricted range of laws of nature are consistent with galaxies and stars, planets, life, and intelligence. If the laws of nature are randomly reshuffled at the cusps, then it is only the most extraordinary coincidence that the cosmic slot machine has this time come up with a universe consistent with us. Do we live in a universe which expands forever, or in one where there is a nested set of infinite cycles? There's a way to find out the answer to that question, not by mysticism, but through science, by making an accurate census of the total amount of matter in the universe, or by seeing to the very edge of the cosmos. नमस्ते। आज हम एक ऐसी बातचीत शुरू करने वाले हैं जो एक अनुभवी खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमर और एक फिलॉसफी के छात्र के बीच होने वाली गहरी चर्चा जैसी है। जरा सोच कर देखिए, आज हमारे पास बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ब्रह्मांड आखिर कहाँ से आया? इसका अंत क्या होगा? ये बिल्कुल वही सवाल हैं जो इंसान हजारों साल पहले भी पूछा करते थे। तो आइए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इन प्राचीन रहस्यों और आधुनिक विज्ञान के अद्भुत कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। करीब 3,500 साल पुराने प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में एक बहुत ही कमाल की लाइन मिलती है। कौन निश्चित रूप से जानता है सृष्टि कहाँ से आई? महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन इन शब्दों से लिटरली बेहद प्रभावित थे। उनका मानना था कि ये शब्द ह्यूमैनिटी की एक साझा ब्रह्मांडीय पहेली को दर्शाते हैं। ये साफ दिखाता है कि प्राचीन काल में सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों के सामने एक किस्म की विनम्रता थी, जो आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की सोच से बहुत मिलती जुलती है। और आज मॉडर्न साइंस का जवाब क्या है? द बिग बैंग। आधुनिक आंकड़ों के हिसाब से लगभग 15.5 से 20 बिलियन यानी 15 से 20 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट हुआ और हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। पर सच कहूं तो एक एस्ट्रोनॉमर होने के नाते ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही द बिग बैंग हमारे मॉडर्न विज्ञान का एक ठोस निष्कर्ष है, लेकिन यह भी इंसान की उसी बुनियादी जरूरत से जन्म लेता है, सृष्टि के रहस्य को सुलझाने की जरूरत। तरीके और टूल्स बदल गए हैं, पर हमारे अंदर के सवाल आज भी वही हैं। अब इस विषय में सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है ये समय के पैमाने। पुरानी सभ्यताएं अक्सर ये मानती थीं कि दुनिया बस कुछ 100 पीढ़ियों पुरानी है, लेकिन प्राचीन हिंदू परंपरा के टाइम स्केल्स देखकर सच में दिमाग घूम जाता है। एक आंकड़े पर गौर करें, ब्रह्मा का एक दिन और रात को करीब 8.64 बिलियन यानी 8 अरब 64 करोड़ साल लंबा माना गया है। ये समय धरती और सूर्य की पूरी आयु से भी ज्यादा है और बिग बैंग से अब तक गुजरे वक्त का लगभग आधा है। कार्ल सेगन ने कहा था कि ये सिमिलैरिटी भले ही एक संयोग हो, पर आधुनिक कॉस्मोलॉजी की वास्टनेस के साथ इसका इतना करीब आना अपने आप में अद्भुत है। खंड 1, लीनियर बनाम चक्रीय ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंतिम फतेह की चर्चा। यहां आधुनिक विज्ञान की दो सबसे बड़ी कॉस्मोलॉजिकल पॉसिबिलिटी सामने आती हैं। पहली है एक लीनियर या रेखिक ब्रह्मांड जो शून्य से शुरू हुआ और बस अनंत काल तक एक सीधी रेखा की तरह फैलता रहेगा, और दूसरी तरफ है एक ऑसिलेटिंग या चक्रीय ब्रह्मांड जिसका ना तो कोई क्लियर आदि है और ना ही कोई अंत। एक ऐसा यूनिवर्स जो फैलता है, फिर वापस सिकुड़ता है और फिर से एक नया रूप ले लेता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्राचीन काल के जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के एंडलेस चक्रों जैसा ही प्रतीत होता है। चलिए पहले इस लीनियर फेट यानी रेखिक नियति पर गौर करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमर के नजरिए से देखा जाए तो यह मॉडल थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता है। इसमें क्या होता है? आकाशगंगाएं एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होती चली जाएंगी। चमकते हुए तारे धीरे धीरे ठंडे पड़कर मर जाएंगे, यहां तक कि मैटर यानी पदार्थ खुद ही डिके होने लगेगा। अंत में ब्रह्मांड सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक बेहद ठंडा पतला सा धुंध बनकर रह जाएगा।
मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब कॉस्मिक होराइजन में देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और एस्ट्रोनॉमर्स का तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। खंड 2, शिवा और ब्रह्मांड। चलिए अब ऑसिलेटिंग ऑल्टरनेटिव की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं सेंचुरी की चोला ब्रॉन्ज मूर्तियां शिव के कॉस्मिक डांस यानी नटराज रूप को बेहद खूबसूरती से दिखाती हैं और इसका सिंबलिज्म एकदम माइंड ब्लोइंग है। इनके ऊपरी दाहिने हाथ में एक डमरू है जिसकी ध्वनि सृष्टि यानी क्रिएशन की आवाज है और वहीं ऊपरी बाएं हाथ में एक आग की लपट है जो इस बात का प्रतीक है कि जो ब्रह्मांड रचा गया है वो एक दिन पूरी तरह नष्ट भी होगा। सृजन और विनाश का ये बैलेंस, ये प्राचीन मूर्ति ब्रह्मांड के फैलने और फिर से सिकुड़ने के ऑसिलेटिंग सिद्धांत का कितना शानदार दृश्यात्मक प्रतीक है ना? और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कार्ल सेगन को इसमें क्या दिखा। उन्होंने इन प्राचीन मूर्तिकला और विचारों को आधुनिक खगोलीय विचारों का एक प्रीमॉनिशन यानी पूर्वाभास कहा था। सोचकर देखिए, एस्ट्रोनॉमी आज जिन साइक्लिकल मॉडल्स और बिग क्रंच जैसी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज की बात मैथमेटिक्स के जरिए कर रही है, उनका दार्शनिक आधार भारत में सदियों पहले से लोग डिस्कस कर रहे थे। ये सच में बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे गहरा ज्ञान और फिलॉसफी समय की बंदिशों को पूरी तरह पार कर जाते हैं। खंड 3, डार्क मैटर और नियति। अब इस फिलॉसफी को वापस हार्ड साइंस की तरफ मोड़ते हैं। फिलॉसफी के स्टूडेंट को अगर फिजिकली समझाना हो कि ये सब तय कैसे होता है, तो जवाब है डार्क मैटर। ये ब्रह्मांड का वो छिपा हुआ द्रव्यमान या हिडन मास है जो इनविजिबल गैस या ब्लैक होल्स जैसी चीजों के रूप में मौजूद हो सकता है। अगर हम इस छिपे हुए पदार्थ का कंप्लीटली सही सेंसस निकाल लें तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इनका गुरुत्वाकर्षण यानी इनकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर है या नहीं जो इस पूरे ब्रह्मांड के फैलाव को रोक सके। सारी फेट इसी डार्क मैटर के हाथ में है। यहां आकर नतीजे दो हिस्सों में बंट जाते हैं। अगर ब्रह्मांड में डार्क मैटर की मात्रा कम निकली तो आकाशगंगाएं हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी और यूनिवर्स अनंत फैलाव की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त या अबंडेंट हिडन मैटर मौजूद है तो आखिरकार ग्रेविटी जीत जाएगी, ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और वो वापस एक बिंदु की तरफ सिकुड़ने लगेगा। यही वो एग्जैक्ट सिचुएशन है जहां कॉस्मोस बिल्कुल एक इंडियन चक्रीय परंपरा की तरह व्यवहार करेगा। संकुचन होगा, रीबर्थ होगा और फिर एक नया बिग बैंग, ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड जिसका कोई एंड नहीं। अब जरा अपनी इमेजिनेशन की लिमिट्स को पुश करते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बातें तो तब होती हैं जब ब्रह्मांड एक चक्र से दूसरे चक्र में एंटर करता है, जिसे विज्ञान में कस्प्स ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। जब विस्तार और संकुचन आपस में मिलते हैं तो जो रेड शिफ्ट होता है यानी आकाशगंगाओं का दूर जाना, वो अचानक ब्लू शिफ्ट में बदल जाता है। कुछ साइंटिस्ट का तो यहां तक मानना है कि इस ट्रांजिशन पर कॉज़ैलिटी यानी कारण और परिणाम उल्टे काम कर सकते हैं। मतलब पानी में पत्थर फेंकने से पहले ही लहरें उठने लग जाएं। और पता है क्या, हर नए साइकिल में नेचर के लॉज और फिजिक्स रैंडमली रीशफल हो सकते हैं, बिल्कुल जैसे किसी ने एक कॉस्मिक स्लॉट मशीन का हैंडल खींच दिया हो। एकदम क्रेजी साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज। खंड 4, अनंत नेस्टेड ब्रह्मांड। अब इस डायलॉग को इसके आखिरी माइंड बेंडिंग एक्सट्रीम पर ले चलते हैं। चलिए अब देख बल्कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अंदर की तरफ भी बिल्कुल अनंत हो सकती है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें तो हमारे सामने एक बहुत ही ग्रैंड स्केल की तस्वीर आती है। ब्रह्मांड असल में एक ऐसी लगातार आगे बढ़ती कथा है जो अनंत फैलाव और पूर्ण विनाश के बीच लगातार झूल रही है। हमारा मॉडर्न साइंटिफिक क्रिएशन मिथ द बिग बैंग असल में उसी सेम रहस्य की खोज का एक कंटिन्यूइंग हिस्सा है जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने अपने दर्शन से समझने की कोशिश की थी। हम लगातार एक ऐसी रियलिटी को समझना चाहते हैं जो हमारे अस्तित्व से बहुत बहुत बड़ी है। आज का यह विश्लेषण कार्ल सेगन के उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ अपने मुकाम पर पहुंचता है। क्या हम आखिरकार एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो बस हमेशा के लिए फैलता ही जाएगा, या फिर हम अनंत चक्रों इन्फिनिट साइकिल्स के एक नेस्टेड सेट का छोटा सा हिस्सा है? आज हमारे आधुनिक रेडियो ऑब्जर्वेटरीज और एक्सरे सैटेलाइट्स इसी अल्टीमेट जवाब को ढूंढने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों,
जब तक हमें आखिरी जवाब नहीं मिल जाता, प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान का ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हमें ऐसे ही हैरात और जिज्ञासा से भरता रहेगा। आशा है आज की इस चर्चा ने आपको नए नजरिए से सोचने पर मजबूर